Okay, we start. Last lecture we learn about the sign magnitude representation of numbers. Also, I told you about the ones complement, twos complement, right? Now today we will go for the next one point, that is floating point and fixed point representations. Right? See, I am showing you slides. Hope you can able to see my slides. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Is it necessary to increase font? Is it right? थोड़ी कम है सर. थोड़ा कम है और बढ़ाओ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Oh, ठीक. Now, today we are going for understanding fixed point representation and a floating point representation. अब आप मोस्ट कैलकुलेटर्स यूज कर लिया है, या अगर आप कोई सी या C++ प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ओके, या कोई अदर प्रोग्रामिंग टूल्स आपने जो हैंडल किया है उसमें आपने नंबर्स दिए हैं, you will get the result. You will supply the data and you will get the result according to the manipulations. Most cases we need to represent our data. So the way of representation will be also a fixed point as well as floating point representation. So here I'm showing you the examples. Okay, how you can represent the fixed point and floating point data. Okay, so here one example that I have taken like 23.456. So here you can see integral part as well as a fractional part. Okay, so this number has two parts. First one is integer and second one is fractional. Okay, now if I talk about four-digit representation, if I talk about the 4-digit representation, then 4-digit representation's point of view, minimum value and maximum value I highlighted here. The minimum value is 0000.0001 and maximum value is max number, that is 9999.9999. Okay, keep it in mind. Okay, so that's why these are the small and larger numbers. Okay, so when you have a fixed point representation format, then that format is divided into three sections like sign, integer and fractional field. Getting? Okay, there are total three fields: sign field, integer field and fractional field. Okay, so when you have unsigned fractional, okay, unsigned integer, okay, then that number, that is unsigned fixed point number, only has only two parts like integer as well as fraction. Okay, but when I talk about the sign fixed point, then again the sign point will be joined. Okay, so you will get total three section like sign, integer and fractional. Okay, तो इस तरह इस फॉर्म में वो क्लब हो जाएगा. Now when I have to represent this number, then there is a series that I have given you like this. Okay, for sign representations point of view, the range is minus 2 raised to k minus 1,
-1 to near about 2 raised to k minus 1 minus 1. Okay, so k is your total number of bits. Okay, how many number of bits you require. Okay, तो आप वहां पर 8 बिट के लिए ले सकते हो, 16 बिट के लिए ले सकते हो, 32 बिट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो. डिपेंड अपॉन द प्रोसेसर साइज, डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी. ओके, आप कौन सा टेक्निक्स यूज कर रहे हो, आपको कौन से टाइप का प्रोसेसर सामने आपके पास है. ओके, मोस्ट केसेस जो ओल्डर कंप्यूटर्स थे उनमें जो प्रोसेसर का बिट था वो रिप्रेजेंटेशन हाई बिट, हाई प्रोसेसर और हायर लेवल लैंग्वेजेस में नियर अबाउट 4 बिट का है. ओके, लेकिन और अगर हाई एंड एप्लीकेशन में जाओगे तो वो 8 बिट का रहेगा. ओके, या 16 बिट का रहेगा. ओके, तो डिपेंड है आप टेक्नोलॉजी और रिप्रेजेंटेशन किस तरह लेते हैं. उसी तरह वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए भी फॉर्मूला दिया है. ओके, नाउ I'm giving you example of the sign representation for the numbers. Okay, so that's why if I take one example, okay, so here in this example I have taken one number, negative number, that is minus 43.625. Okay, so minus 43.625 मुझे अगर आपको इस फॉर्म में बताना है. ओके, सो दैट्स व्हाई मैं इस फॉर्म में, यानी मैं वहां पर फॉर्म ले रहा हूं 32 बिट का फॉर्मेट. ओके, तो 32 बिट का जो फॉर्मेट है उसमें मैं इस तरह बिट का रिप्रेजेंटेशन करने वाला हूं. ओके, मुझे एग्जांपल इस तरह शो आउट करना है आपको. उसमें 1 बिट रिजल्ट रहेगा साइन के लिए, 15 बिट रिजल्ट रहेंगे इंटीजर पार्ट के लिए, और 16 बिट रिप्रेजेंट किए जाएंगे, रिजल्ट रहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए. गॉट द सिनेरियो ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल में एक नंबर लिया है हमने माइनस 43.625, 32 बिट का फॉर्मेट यूज करेंगे. उसमें 15 बिट इंटीजर को रिजल्ट किए हैं, 16 बिट रिजल्ट किए हैं फ्रैक्शनल को, और सिंगल बिट रिजल्ट किया है वहां साइन के लिए. ओके, now अभी ये जो नंबर आपको दिया है 43.625, आई फर्स्ट शो यू how I do the conversion, from decimal number to the fractional one, sorry, decimal to the binary. Okay, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल का आंसर लेकर आया था. ओके, मींस हियर 0 bit is used for either positive or 1 bit is used for negative. ओके, -43 है तो -43 के हिसाब से आप सभी का जवाब वहां पर रहेगा. सर माइनस साइन है, 1 बिट इज नेसेसरी, सो दैट्स व्हाई साइन बिट 1 लिया है. ये तो आपको जम जाएगा, अब ये तो आपको समझ में आ गया. ओके, लेकिन 43 है तो 43 के लिए मुझे बाइनरी का कन्वर्शन चाहिए, या 0.625 है तो उसका बाइनरी का कन्वर्शन चाहिए. मैंने 43 या पिछले टाइम 63 या आपको कोई नंबर 64 है तो उसका मैंने बाइनरी का कन्वर्शन आपको करके बताया था. ओके, आपको वो याद भी है. पहली टेक्नोलॉजी जस्ट मैंने पावर के हिसाब से उसको कन्वर्शन करके भी बताया, और जस्ट पावर के हिसाब से उसका वेट रख दो और उसको फाइंड कर लो एडिशन करके. लेकिन आज दूसरी एक टेक्निक और बताने जा रहा हूं. तो एग्जांपल मैं यहाँ पर इस तरह लेकर आया हूं. अगर मुझे 43 है तो 43 मैं यहाँ पर बाइनरी के कन्वर्ट कर रहा हूं, या 0.625 है तो वह बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं. जस्ट आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. सी, ये लाए कैसे और ये यहाँ पर पुट आउट कैसे किए जाए. सी, आई एम टेलिंग यू. ओके, हियर I am dividing this 43 by 2. Successively, I am going to divide this 43 by 2. So first, if I divide it, I will get 21 to the
42. Okay, so that's why here remainder is 1. Okay, similarly the 21 remainder that again taken. Okay, sorry, 23 quotient is taken, and 21 is again divided by 2, you will get 10. Okay, if you divide it continuously, simultaneously, okay, every time you will get some quotient and every time you will get some remainder. Okay, so that's why that remainder is organized from the start to the bottom. Okay, and here the bottom remainder will be a MSB and topmost remainder is LSB. ओके, तो हम यहाँ पर जो नंबर लिए हैं वह रहेगा मेरा 1010111. ओके, तो मुझे 43 इस डेसिमल का इक्विवेलेंट मिल जाएगा 101011. आई होप सभी को समझ में आया होगा. अगर आपको इस तरह समझ में आया होगा तो ये ट्रिक आप एडॉप्ट कर सकते हो. अगर मैंने पहले वाली ट्रिक बताई है, जस्ट पावर लिख लो, पावर के हिसाब से 128 64 32 16 8 2 4 1. ओके, उस अकॉर्डिंग अगर लिख के भी पावर आप लिखकर नंबर को पुट आउट करके मल्टीप्लाई करके आपको इमीडिएटली मिल जाएगा एडिशन. ओके, तो 2 मेथड्स आर विथ यू, यू कैन चूज एनीवन. ओके, तो इसमें से आपको यहाँ पर डेसिमल टू फ्रैक्शनल, डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ट करके मिल जाएगा. नाउ बात बची है अभी 0.625 की. ओके, तो 0.625 भी कैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया जाए. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड है. तो इस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2. ओके, और 2 से मल्टीप्लाई करके हमें कुछ तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा. वह रिजल्ट रहेगा 1.25. लेकिन यहाँ पर 1.25 अगर मिला तो मैंने क्या किया, 1 को जो इंटीजर पार्ट है उसको सेपरेट कर लिया और जो फ्लोटिंग पार्ट था, जो फ्रैक्शनल पार्ट था, उसे सेपरेट कर दिया. सो दैट्स व्हाई 1.25 में से 1 अलग लिखा और इसलिए लिखा 1 प्लस 0.25. ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट और रियल पार्ट मैंने इंटीजर पार्ट मैंने अलग अलग लिखा. नाउ 0.25 will be the fractional part. So again I will take that fractional part for multiplications point of view, and again it multiplied with the 2. So that's a 0.25 into 2, you will get 0.5. Now here 0 is integer and 0.5 is fractional. Okay, again 0.5 fractional, again multiply with 2, I will get 1. Okay, if it is 1, so that's why integer will be 1, remainder means fractional will be 0. So that's why we entirely finish number successive multiplication here. So that's why आगे जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नंबर खत्म हो गए. तो यहाँ पर मुझे 3 नंबर्स मिले हैं, तो 3 नंबर्स इस तरह रहेंगे 1 0 1. टॉप से चालू करोगे बॉटम तक. ओके, तो इस वजह से मुझे फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट मिला है 0.625 का 0.101. ओके, तो ये 0.101 मैं लेकर ऊपर जा रहा हूं. ओके, आपको सभी को समझ में आ गया ये बात. ओके, सो दैट्स व्हाई यह 43 और 0.625 का आपने बाइनरी कन्वर्शन किया. ये बाइनरी कन्वर्शन मैंने यहाँ पर लिखा. ओके, सो दैट्स व्हाई मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 43 का इक्विवेलेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई 101011 एंड 0.625 का है 0.625 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 101. ओके, अभी मुझे यहाँ पर 15 बिट कन्वर्ट करना है. सो दैट्स व्हाई 15 बिट के लिए मैंने इतने सारे यहाँ पर 0 का यहाँ प्रीसीडिंग कर दिया. ओके, और यहाँ आगे 101 के आगे यानी 16 बिट का करना था फ्रैक्शनल पार्ट में, तो उसमें आगे सक्सेसिवली 0 पास आउट कर दिए. तो मुझे यहाँ इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया जो मैंने वहां पुट आउट कर दिया. दैट इज माय आंसर. आई होप यू गॉट दिस, how you can find minus 43.625 into a fixed point representation. Okay, but कंप्यूटर सिस्टम कुछ इस तरह एग्री नहीं होता है. कंप्यूटर सिस्टम इस तरह का नंबर शॉर्ट करने में एग्री नहीं होता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वहां पर इस
रिप्रेजेंटेशन की जगह फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, सॉरी फ्रैक्शनल पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट किया जाता है। ओके, तो रिमेंबर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम में रेयरली शो किया जाता है। ओके, लेकिन आपको वहां पर आगे चल के फ्रैक्शनल पार्ट का रिप्रेजेंटेशन वहां पर शो आउट करने की जरूरत पड़े। ओके, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो सेकंड आएगा, ओके सॉरी, हाँ ओके ठीक है, एक एग्जांपल और दिया था मैंने। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सो दैट्स व्हाई फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आपको इस फॉर्म में उसे शो आउट करने की जरूरत रहेगी, साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट एंड मेंटिसा। ओके, तो कभी भी कंप्यूटर सिस्टम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट करता है तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे, साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट और मेंटिसा। ओके, तो साइन बिट या एक्सपोनेंट और मेंटिसा ये अपने नंबर के द्वारा यहाँ पर फाइंड आउट किए जाएंगे। ओके, एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, सपोज अ नंबर 32 bit format is used here. Okay, suppose a 32-bit format we need to use here. So in that, 1 bit is used for sign, 8 bit is used for exponent, and 23 bit are used for fractional part. Remember, 1 bit for sign, 8 bit for exponent, sign exponent, and 23 bits for fractional part representation. हम एक नंबर ले रहे हैं, यहाँ नंबर कुछ इस तरह रहेगा -53.5। ओके, इस -53.5 को मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ बाइनरी फॉर्म। ओके, सो दैट्स व्हाई बाइनरी फॉर्म में उसे मैंने लिखा है -1101001.1। ओके, गेटिंग एवरीवन? ओके, सबको समझ में आया ये बात? सो दैट्स व्हाई रिमेंबर -53.5 को मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया इन बाइनरी फॉर्म। मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल बताया उसमें वहां आपको करके बताया मैंने, अगर मुझे डेसिमल नंबर है 53 तो उसका सक्सेसिव डिवीजन करो बाय 2 से और मुझे वहां बाइनरी फॉर्म मिलेगा। 0.5 को मल्टीप्लाई करो सक्सेसिवली बाय 2 से, ओके, यू विल गेट अ बाइनरी फॉर्म। ओके, तो 0.5 आखिरी में आपने देखा, उसका मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो यू विल गेट 1। सो दैट्स व्हाई उसका फाइंडिंग वेरी इजीली रहेगा। सो दैट्स व्हाई वो 1 यहाँ पर मिल गया। और 53 का अगर आप 2 मिनट में कैलकुलेटर में करके देखोगे या नोटबुक में करके देखोगे तो इमीडिएटली आपको 110101 मिल जाएगा। ओके, ये तो हुआ कन्वर्शन फ्रॉम बाइनरी टू, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी। नाउ यही फॉर्म मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट आउट करने जा रहा हूं। अभी जो डेसिमल नंबर्स है, ओके, वह डेसिमल मैंने बाइनरी में लेकर आया, लेकिन बाइनरी में भी आपको वहां पर डॉट ऑपरेटर है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं डॉट ऑपरेटर को वहां एडजस्ट करने जा रहा हूं। ओके, सो दैट्स व्हाई वहां मैं एडजस्टमेंट के लिए वह डॉट ऑपरेटर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मूव आउट करा रहा हूं। सो दैट्स व्हाई मुझे मिलेगा -1 पॉइंट, ओके, देन मेरो -1.101011, ओके, इनटू, ओके, अभी इनटू यहाँ पर मैं 2/5 लिख रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज मैंने 5 प्लेसेस वहां पर डॉट ऑपरेटर को वहां पर लेफ्ट साइड शिफ्ट आउट करा दिया, तो 5 प्लेसेस में शिफ्ट कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई 10101 को मैंने राइट हैंड साइड में फ्रैक्शनल में ले लिया, ओके, रियल से। सो दैट्स व्हाई इंटीजर से मैंने उसको फ्रैक्शनल पार्ट में ले लिया, इस वजह से मैंने उसे लिखा है -1.101011 into 2/5। गेटिंग माय पॉइंट?
सबको समझ में आया? अभी ये प्रेजेंटेशन हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है साइन बिट, एक्सपोनेंट पार्ट और मेंटेसा। ओके, सो दैट्स व्हाई साइन बिट। ओके, तो साइन बिट यहाँ पर माइनस के लिए माइनस रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई माइनस के लिए यहाँ पर 1 रहेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई माइनस के लिए यहाँ पर 1 बिट का रिप्रेजेंटेशन लिया है। अभी एक्सपोनेंट जो पार्ट है वह एक्सपोनेंट पार्ट रहेगा यहाँ पर 101। ओके, सो दैट्स व्हाई वह 101 यहाँ पर एक्सपोनेंट पार्ट शो आउट किया गया है। ओके, और यहाँ जो मेंटिसा पार्ट है वह रहेगा 101011। ओके, जो डॉट ऑपरेटर है वह डॉट ऑपरेटर के आगे के सारे जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है वह यहाँ पर मूव आउट करा रहा हूं। ओके, नाउ अभी क्वेश्चन अराइज होगा कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो 5 यानी 101 कैसे आया। सी, मैं यहाँ पर नीचे लाइन लिख के रखे हैं। ओके, वेयर 00000101, ओके, इट इज यूज फॉर 8-bit बाइनरी वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट वैल्यू प्लस 5। जो यहाँ पर 2⁵ लिखे हैं वह 2⁵ यहाँ पर हम कन्वर्ट किए हैं in terms of binary. So that's why 5 is equivalent binary form is 101. Okay, so that's why that 101 exponent part is written. Okay, so that's why in terms of exponent place you can see the 000000101. Right? Any doubt? किसी को डाउट होगा तो पूछिए। Any doubt? Okay, should I proceed for the next point? Yes, sir. Okay. Now the next point that I want to cover today, that is binary coded decimals. Okay, now we are going for understanding of binary coded decimal. Okay, so see, BCD code shortly हम इसे कहेंगे, तो it is mostly used for representation. ओके, सो दैट्स व्हाई रिमेंबर, जैसा आपको ये पता है कि भाई बाइनरी नंबर से, ऑक्टल से, हेक्साडेसिमल है, डेसिमल नंबर है, इन द सेम फैशन बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। ओके, तो बीसीडी कोड भी जनरली अक्सर यूज करते हैं। क्वेश्चन, मोस्टली बीसीडी कोड का यूज कहाँ होता है? रिमेंबर, क्वेश्चन क्या रहेगा, बीसीडी कोड का यूज कहाँ होता है? ओके, तो जनरली हम बीसीडी कोड का यूज एप्लीकेशंस में जहां हमें डिजिट शो करने की जरूरत रहती है वहां हम इस पर्टिकुलर बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। ओके, यानी हम तो नंबर अक्सर एप्लीकेशन में शो करते हैं, लेकिन कहाँ? मोस्टली, फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी तक पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया है, कैश काउंटर पर कैश काउंट कर चुके हो, कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस किए हैं, डिजिटल रिस्ट वॉच पे वॉच देखा है, टाइम देखा है, डिजिट्स का टाइम देखते हो, राइट? हमेशा वहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, कौन कौन से नंबर आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के आगे अगर जाओगे तो वहां इमीडिएटली वहां नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट नंबर के लिए वहां पर वह डिजिट 0 हो जाएगा, वह रोल होगा,
यानी 01 to 9, 01 to 9, 01 to 9 में रोल होते रहेगा। इमीडिएटली वहां पर सेकंड डिजिट इमीडिएटली आ जाता है। 01 to 9 हो गया, तो उसके बाद इधर भी 0 का 1 होगा। पेट्रोल पंप के ऊपर अगर देखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जब 0 होगा तो इधर का जो डिजिट है वो 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर डेसिमल जो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो नंबर है वो रोल होते रहते हैं, राइट। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, राइट। इस तरह वहां पर आपको डिजिट्स आते रहेंगे। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशंस में जनरली आप कैश काउंटिंग मशीन्स में जाओ, पेट्रोल पंप पर जाओ, या फिर जहां काउंटिंग होती है, ओके, या आप वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो पर्टिकुलर वहां पर नंबरिंग सिस्टम एडॉप्ट की जाती है, वहां पर नंबर रोल होते हैं। तो रोल होने के बाद वहां पर जो नंबर दिखाई देते हैं तो वो कुछ इस फैशन में आपको वहां पर दिखाई देते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई वहां वह पर्टिकुलरली ये कोडिंग सिस्टम वहां यूटिलाइज की जाती है। ओके, so that's why we are going to understand this particular binary coded decimal number system. Okay, in this code each decimal digit is represented by 4-bit binary number. Okay, here whenever you are going to understand this particular binary coded decimal number system, so that's why every decimal digit is represented by 4-bit binary number. BCD is a way to express each decimal digit with a binary code. Okay, in the hexadecimal number system with 4-bit we can represent 16 numbers. Okay, so 0000 to 1111, but in binary coded decimal we will use only 0000 to 11001, then में रखना 0000 to 1001. Okay, the remaining 6 code combination, that is 1010 to 1111, are considered as invalid binary coded decimal number. याद रखिए। ओके, तो 9 के आगे के नंबर यहाँ इनवैलिड कंसिडर किए गए हैं, तो वह नंबर यहाँ चलेंगे नहीं। Got it? So in terms of BCD numbering system, the decimal number is separated into 4 bits for each decimal digit within the number. Each decimal digit is represented by its weight binary value, performing a direct translation of a number, so that 4-bit group represents each displayed decimal digit from 0000 for 0 to 1001 for 9. ओके, याद रखिए। हाँ हाँ, यहाँ पर आपको जो भी नंबर रिप्रेजेंट करना रहेगा तो वो रहेगा बाइनरी में। अगर 0000 है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 के द्वारा, और 1001 है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे 9 के द्वारा। ओके, सो सी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं 357। तो 357 is 357. Okay, so that's why 350 and 7 are the total 3 digits. Okay, so in decimal it would be represented in decimal. Okay, but now whenever I want to represent into the binary coded decimal, so I write here 3. Okay, I write here 3 as a 0011. Okay, very simple, 0011. 5 I write 0101, and 7 I write 0111. ओके, एक चार्ट के द्वारा यहाँ पर उसका इजियर कन्वर्शन मेथोडोलॉजी आपको शो आउट करने जा रहा हूं। रिमेंबर, इस बीसीडी को हम स्पेसिफिक वेट यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ इस बीसीडी को हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ वेट में आपको ये 4 वेट्स दिखाई देंगे, 8 4 2 1।
तो मोस्टली इस पर्टिकुलर बाइनरी कोडेड डेसिमल को 8421 कोड भी कहा जाता है। याद रखिए, इस 8421 वेटेड कोड को यहाँ पर 8421 कोड भी कहा जाता है। ओके, तो इस बीसीडी का आपको दूसरा नाम भी रहेगा 8421 कोड। ओके, तो मैं यहाँ पर ये पावर लेवल यहाँ पर शो किए हैं। तो बाइनरी की पावर लेवल ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, 2^3, 2^2, 2^1, 2:0, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है 8421। Okay, I hope you cannot find any kind of difficulty for understanding of this. Okay, now I'm showing you here the relationship between the decimal, binary, and hexadecimal number. Okay, so that's why here in this table you can see a decimal number in first column, binary in second one column, and binary coded decimal will be in third one column. Okay, so see first row as 0. 0 is written in binary form as 0000, but in terms of binary coded decimal we will write 0000. Okay, same fashion is adopted here for the binary as well as binary coded decimal. Okay, but till 9 only. After 9, this particular similarity you cannot find. Okay, so for 1 you will see 0001. Again, in terms of binary coded decimal, it is again 0001. Similarly, for 2 decimal number, it is 0010. Similarly, in binary coded decimal, it is 0010, and so on till 9. Okay, for 9 it is 101, 1001, and in terms of binary coded decimal, it is 1001. But when you move for further numbers, if for 10, okay, for 10, okay, if I write 10, so that's in terms of binary I say 1010. Okay, but if you see in terms of binary coded decimal, okay, if you see in terms of binary coded decimal, 10 is written as 1 and 0. 1 equivalent binary, 0's equivalent binary will be shown. So 1 equivalent binary is written as 0001, and 0's equivalent binary is 0000. Same fashion will be continued till 19. Okay. Similarly, another means immediately for 20, again it is shifted for 20. Okay. तो शायद आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा इस टेबल के द्वारा कि यहाँ नंबरिंग कैसे होता है, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और बाइनरी कोडेड डेसिमल. गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट? Okay. Now, two things that I want to show you here, advantages. This particular binary coded decimal number are very similar to your decimal system, and here we need to remember only binary equivalent number of decimal number 0 to 9. Okay, this is the advantage. And drawbacks means here this BCD coding is has addition and subtraction of BCD have different rules. Remember, when you use this particular binary coded decimal for addition and subtraction, there are different kinds of rules. Okay. Similarly, BCD arithmetic is quite complicated, and BCD needs more number of bits than binary to represent a binary decimal number. Okay, so this particular numbering system has less efficiency as compared to the binary. Okay, so that's why
this particular binary coded decimal number has this drawback and advantages. Okay. Now, now to go for the examples, first of all, I have very much less time with me. Only 2 minutes are available. So I think it is necessary to stop. Okay, within 2 minutes, I could not end up that example. So that's why here I just take your attendance very quickly. Okay, then I hope only 1 minute with me. Okay, so if you have any doubt, you can ask me very freely. Okay, yeah, you can ask me any doubt. सबको समझ में आया? No, sir. And yes? Yes, sir. Okay. Most probably, I will take your lecture next lecture शायद मुझे पता नहीं. ओके, लेकिन दूसरा सर आ जाएगा आपको और एक प्रोफेसर अतुल करोड़े सर will be there. He will continue your digital electronics from next lecture also. Okay, so I will try to hand over as early as possible. Okay, so for today's point of view, thank you very much, and we will see in your further subjects point of view. Okay, so best luck for all of you. Thank you very much. Thank you, sir.